you want to join the IAS? How many are serious about it? You're not serious? You don't want, huh? Foreign service? So same thing, what I mean is civil services. You're also serious, want to join? Okay, that's great. Now if you are serious, then you have to work also very seriously. And it has three components, as you know that. Prelims are over, means you must be preparing well, I'm sure. And then the interview will come later. First thing I can tell you from experience is you must have self-confidence. You want to join Indian Foreign Service? You say, I will join, I shall join. That's very important to have confidence in yourself rather than having doubts. But I'm here today to talk to you about the personality test. I hope you know it's called personality test, it's not called interview. आपको मालूम है? Interview, इसको हम interview बोलते हैं. The word is personality test. It's not interview. They want to see the personality of the person. First, I'll start with asking you any questions that you have. You may be having some questions, some doubt, anything you want to know. First, ask me, whatever you want to ask. Let us start with that. Anything you want to know about this. Okay, while you are preparing for mains now, I think you should simultaneously prepare, and let me tell you, whatever preparation you make for the personality test or interview as we call it generally, it is not only for this, not for civil services only. See, these are things which will help you in life. You will have to face interviews many times. Even conversation is a kind of an interview when you talk to people. So any questions you want to ask me, any doubts you have, anything you have in your mind, yeah, please go ahead. Does background matter? What's your name? Rituraj. Rituraj is saying, does background matter? That young man is busy with mobile, so we can. आप आगे आ जाइए थोड़ा. ऋतुराज जी पूछ रहे हैं, did you hear me? I said if you have any questions, any doubt, anything you want to know, you can ask me any questions first, and then we'll start with that. Mr. Rituraj is saying, does background matter? The answer is big no. It does not matter at all. आप भी सुन लीजिए, क्या नाम है आपका? आदित्य. I had asked them to ask me any questions they want to ask me about personality test interview. He is the first of the mark. He has asked me the question whether background matters. The answer is big no. And I have been going to UPSC also, and now of course I am involved with the mock interviews with Sankalp and some other institutes here. I will tell you later on. Okay, any other questions you have, any one of you? Anything you want to know? Any doubt, any clarification? No? You haven't thought of it. You are all busy preparing for mains, isn't it? I think that is the main reason. Anyway, it's the wrong time to talk to you about it. But it's good to be, off the mark, as I said. But anyway, let's come to that first. Now, I think generally, wherever I start my training programs, I am a corporate trainer also. First thing I tell people is to calm your mind every day before you study. Start even studies in the morning. Because there must be a lot of stress. हालत तो खराब होगी. Tension भी बहुत है. Time management की problem है. You are running after time also all the time, isn't it? यहाँ जाना है, वहाँ जाना है, ये करना है, वो. I'll talk about that. I'll talk about these two things also. Remind me if I forget. Stress management and time management. I will not go into theories. I'll just try to give you some practical examples as to how you can go about it. But first thing I'll request all of you is that please sit down relaxed wherever you are. All leave your pens. Listen to me carefully and then you can follow a little thing.
I'll be asking you to count only up to 100, not a big deal. Wherever you are sitting, after closing your eyes or first with your open eyes, relax your body totally, totally, whichever way you want, except that don't lie down, don't go to bed, kind of thing, situation. Close your eyes, look here on the nose, concentrate on the nose, and listen to me first, young lady. First, listen to me, as I said, some have started already. The breath goes in, comes out. This will be counted as 1. You have to count only up to 100. You don't have to take any special breath. कोई जोर नहीं लगाना है, कोई नॉर्मल ब्रीदिंग जो आप कर रहे हैं उसको करना है सिर्फ. Mind is a monkey. It will go here and there. Definitely, you will realize after some time. And a lot of things, mind is always busy. Don't worry about it. If you suddenly recollect, come back. Again, count. And once you do 100, just raise your hand. Right? So I will know that you have done it. Then again, you can keep sitting closed eyes. Once you all do this, it should not take more than 5 minutes maximum. But those who do, they will finish in 30 seconds also. Don't do that. You get me what I am saying? In a relaxed way. Whether it takes 3 minutes, 4, don't worry about it. It should be a part of your routine in life. Otherwise also, in what situations, I'll talk to you a little later. Here we go. Please sit down, relax. पहले relax your bodies. आराम से पीछे बैठ जाओ, पीठ लगा लो, legs को stretch कर लो, हाथ जैसे करने कर लो, थोड़ा कर लो. 100 तक गिनती is something which you know, I am sure. Not a very tough task. Okay, please do that. आराम से. मैं भी करता हूँ आपके साथ. आराम से करना है, जोर नहीं लगाना है. और सांस का अंदर जाना बाहर जाना will be counted as 1. Just in a very relaxed mood, concentrate, please. हाँ ठीक. ये दिखाना है, मैं बताऊंगा कब. इसको निकाल लेना. हो गया आपका? आपने कर लिया? अच्छा, ओके. कंसर्न ध्यान नहीं आ रहा. फिर कोशिश करो दोबारा. पॉज करो उसको. आराम से, कोई जल्दी नहीं, कुछ नहीं. माइंड इधर उधर जा रहा है तो प्लीज गेट इट बैक.
चलिए हो गया, आंखें थोड़ी रब कर लीजिए, सब लोग जो हैं, यू विल फील लिटिल बेटर। कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है? फीलिंग बेटर? थोड़ा टेंशन कम हुई है? कैसा लगा आपको? ठीक है। तो ये जब भी आप सुबह उठ के करो, जब टेंशन में हो उसको कर लो, 2-3 मिनट की बात। तो जब भी करोगे आपको फायदा होगा, माइंड काम हो जाएगा, कंसंट्रेशन बढ़ेगा, इससे अच्छा फायदा होगा आपको। मेक इट ए पार्ट ऑफ योर लाइफ। सोते वक्त भी अगर ये, इफ यू बिफोर यू लाई डाउन ऑन द बेड, इफ यू डू इट, यू विल गेट गुड स्लीप, लेट मी टेल यू दैट, बिकॉज यू आर ऑलरेडी इन दैट मोड ऑफ स्लीपिंग। कितने लोगों का माइंड गया इधर उधर? सबका ही गया होगा। Everyone's mind has gone इधर उधर। Okay, so let's go back to what the personality test we were talking about. What is it that the UPSC is looking for first? Isn't it important? उनको देखना है, and their job is to select and not reject. एक बड़ा important फर्क है when you go in a corporate job, तो उनको होता है ना, या किसी और जगह जाओ तो एलिमिनेशन इज द वन वे ऑफ हैविंग इंटरव्यूज। नो, नॉट हियर। द जॉब इज टू सिलेक्ट द बेस्ट फॉर द कंट्री। So what do they look for? They look for smart, intelligent people with lot of common sense, who are generally aware of what is happening around, isn't it? And they can see whether you can deliver the goods, means what, whether you can serve the people of India or not, isn't it? Now, marks are very low, of course, they are 275 marks. And some people think it doesn't matter, but it does matter, because ultimately they get added to the mains. If you've done very well in mains, and if you don't do well in interview, then your rank will come down and you may not get the service of your choice. And vice versa is also true. If you do well, you will go up. So it's in the interest of all of us that we do well in that also. Now, if that be so the question that I had said was that what are they looking for? They are looking for, I gave you very, very broad definition. And unless you talk to people, how do you know what kind of a person is he? Otherwise, only on the basis of written they can recruit people. But if you have mugged up everything, let us say, and you have just passed your exams, you can't be given a job. Like in India, they have dispensed with class 3 and class 4 interviews now recently. But I think that was for a very good reason, whatever they had done. So it's a long list if you ask me, but don't be overawed. I had noted it down. I'll just tell you that. See, it always starts with your appearance first. When do you make the first impression in life? When you meet a person for the first time? Is it right that the first impression is the last impression? Do you get a chance in life to make the second impression? First impression with the second, third visit? No, you don't, isn't it? So, you have to ensure that first impression is good. And how do you make it? First thing is look. जैसे आप किसी कमरे में किसी से मिलने जाते हैं या आपके पास कोई आता है, तो you always have some kind of an idea by seeing this person, भी ये आ रहे हैं भाई साहब या बहन जी आ रहे हैं तो कैसे हैं, गलत है सही है? तो your look should be smart. Smart doesn't mean that you must wear a suit costing over 1 lakh of rupees. It's not that at all. Smart is that if you start from above, in the case of boys, young people, okay, cutting वगैरह हो, neat and clean आप हो, isn't it?
या बाल टाइड अप हो, isn't it? One should look for, and one should look formal. Formal means क्या भाई, सूट पहनो, टाई बांधो, सूट नहीं पहनना है, गर्मी है तो खाली टाई बांध लो, अच्छा लगता है. हालांकि many people say what is the need, बहुत गर्मी है. When I had appeared for my interview way back in 1966, आप हैरान होंगे, in the last century, I am an ancient piece. I was, mine is 1967 batch of the IPS. उस जमाने में हर कोई सूट ही पहनता था. मई के महीने में इंटरव्यू होते थे. आजकल तो आपके दिसंबर जनवरी वगैरह में होते हैं, हमारे टाइम में मई में इंटरव्यू होते थे, लेकिन सब सूट पहनते थे. फर्क पड़ता है. कुछ लोग कहते हैं फर्क नहीं पड़ता. फर्क नहीं पड़ता. मैं आ सकता था आपकी तरह, ऐसे भी आ सकता था, और मुझे तो कोई इंटरव्यू देना भी नहीं है, लेकिन मैंने सोचा नहीं, आपसे बात करो, मेरा भी इंटरव्यू है, आपके सामने तो है ही है कम से कम. आई मस्ट लुक फॉर्मल. Formal doesn't mean you must wear, as I said, costly clothes. No. And in the ladies case, सलवार कमीज पहनिए आप, या जो भी साड़ी पहनिए, या whichever region you belong to, you can wear that. Normal, not much jewelry and all, not much makeup and all. That's what formal is all about. इसमें और कोई खास है नहीं है. और फिर कलर कॉम्बिनेशन भी थोड़ा रीजनेबल होना चाहिए, isn't it? अगर आप लाल जूता और पीली कमीज और ये सारा पहनोगे तो बड़ा अजीब लगेगा. आपके पास भी कोई नौकरी के लिए आएगा, आप नौकरी दोगे उसे? नहीं दोगे ना. एंड हियर यू आर गोइंग टू सिलेक्ट द टॉप गाइज, isn't it? तो एक अभी मैंने देखा एक स्टैंडर्ड ऐसे लगता है जैसे फैक्ट्री लगी हुई है. आप नीली शर्ट पहनते हैं, नीला ट्राउजर पहनते हैं, टाई बांधते हैं, डार्क, ठीक है, दैट्स ओके, बट ऐसा कुछ मिलता जुलता वो पहना जाए. सो दिस इज व्हाट द अपीयरेंस फर्स्ट. तो अपीयरेंस के बाद क्या है, नेक्स्ट स्टेप क्या है? एंट्री है. आप एंट्री है ना. अब एंट्री कैसे करनी किसी रूम में, आप बताइए. आप कैसे किसी से मिलने जाते हैं तो एंट्री कैसे, दरवाजा बंद है, आप कैसे एंट्री करते हैं? First of all, I'll open the door and request him to let me inside the room and ask for the permission, may I come in, sir? And after that, I'll wish all of them who are sitting there, especially first of all, I'll mention the chairman who's heading the board, and after that, I'll mention all of them and greet them all. Good afternoon, good morning, whatever. And after that, if they don't respond, and then I'll ask, can I sit or not? So this would be the entry. Very good, excellent, very well said. What's your name? Sir, Rahul. Rahul is, whatever he said you've heard, you have. So he has given the perfect drill which should be done. There is a little modification which I will suggest. And see, whatever I suggest to you, it's not necessary for you to follow me. But based on my experience, I thought I'll share this with you. See, for entry in the room, first you should knock at the door. How does one know? Even in homes also, this is a matter of privacy. When you enter a room, generally, there may be, somebody may be in a different kind of a clothes, or maybe they are ladies, whatever. So knock at the door thrice. Thrice. Why I said thrice? You also have to see that you don't keep on, तो भाई साहब मेरी बात सुन लो. Not that, is it? And then naturally you can open, as you said very rightly, and then you say, may I come in, sir? You have to seek permission only from one person, and who is sitting in the middle. He is generally the chairman. In mock interviews, they will be here, you will do, all of you will do, I am very sure. You will find that there may not be 5, there may be 4, but sometimes it's written generally there who is the chairperson. You have to address him only. Because if you have addressed him, the entire board gets addressed. समझ गया?
क्रूड लैंग्वेज वन से हाथी के पाँव में सबका पाँव है, तो सारा बोर्ड हो गया. But there is an exception to this rule. If there is a lady there, then after the chairperson, you must wish that lady also. That's it. So after opening the door, and when you are asked, you seek permission, and when you are asked to get in, you walk and go near the chair, and then stand there. Don't seek permission to sit, Mr. Rahul. Never. He may be busy, he may be seeing some papers, he may be busy talking to somebody, or he may be just trying to see how you behave. Right? Mannerism. Wait, and once you are asked to sit, then take your chair and then sit. Pull the chair and sit. Now, if you are wearing a suit, but the suit, by the way, these days there is a rewaj of keeping beard, everybody. I think it's more for convenience. उस दिन अगर हो सके तो उसको भाई शेव कर लेना है, हाँ? अच्छा लगेगा, इट्स फॉर योर गुड. तो व्हेन यू वेयरिंग ए सूट, ये 2 बटन वाला कोट है. कैन यू सी दिस? Only the upper button should be on generally also. 3 बटन है तो ऊपर वाले 2 बंद कर लेंगे. आपने देखा होगा टीवी पे जब प्राइम मिनिस्टर्स प्रेसिडेंट्स आते हैं बाहर के, आपने देखा होगा कभी, वो सूट ही पहनते हैं ऐसे ही, और ऐसे ही करते भी हैं, वो बटन भी लगाते हैं, ऊपर वाला लगाते हैं. अभी ध्यान से देखा नहीं होगा, हैव अ लुक एट दैट नेक्स्ट टाइम. Most of them, there are rare exceptions like Trump and all, उनको छोड़ दिया जाए, but everywhere. But once you are asked to sit down, then you take off that button and sit relaxed. Relaxed कैसे बैठना है? रिलैक्स बैठने का सबसे आसान नुस्खा है, पीछे हो जाइए और अपनी पीठ कुर्सी की पीठ के साथ लगाइए. आप सारे लगाइए, पीछे सारे लगाइए. थोड़ा कॉन्फिडेंस बढ़ रहा है? पीछे है भाई कोई? नॉट टू वरी राहुल, डोंट वरी, देयर समबडी एट योर बैक एंड यू हैव टू सिट रिलैक्स्ड. वॉल्यूम ऊंचा करना, डरो नहीं बेटा, जोर से बोलो, आई एम हियर फॉर योर हेल्प. मेरी आवाज कम है? नहीं, आप कह रहे हैं ना इसको वॉल्यूम के लिए ऊंचा करें, ऊंचा करो वॉल्यूम. कह रहे नहीं हो सकती, मैं ऊंचा बोलता हूं, ठीक है? That's the way of doing it. Okay. So, I was saying sit relaxed, let your back touch the back of the chair. Sit relaxed. Don't worry, have no tension. Before you get into the room, you will of course reach well in time, go to the washroom, look at yourself, and after that, seeing that you look okay, try to have a glass of water and do this what you just did. He doesn't know. What's your name, beta? शिवानी. और आपका क्या नाम है? आपका? हाँ. I think they have not, these 3 have not, I had told them to count up to 100. आंखें बंद करके सांस पे ध्यान के देके वो करेंगे तो you will feel better. And then you go back to first thing that I said, have your self-confidence. No doubts at all. No doubts at all. कि मैं इंटरव्यू मेरा अच्छा होगा नहीं होगा, सवाल पूछेंगे नहीं पूछेंगे, no, nothing at all. Self-confidence is a very big key in life. इसको आज का वैसे बना लो, मंत्री बना लो. डाउट नहीं करना, चले जाना है. भगवान में विश्वास करते हो? यू ऑल ऑफ यू बिलीव इन गॉड? प्रे करो, और जो करेगा अच्छा करेगा. एंड IAS और IFS और इंडियन पुलिस सर्विस, दे आर नॉट द एंड ऑफ द वर्ल्ड. अगर एंड ऑफ द वर्ल्ड होता फिर तो सारे 135 करोड़ सारे ही IAS IPS बनते भाई. बाकी के लोग कैसे चल रहे हैं? हिंदुस्तान इतनी तरक्की कर रहा, ऐसा कुछ नहीं.
योर जॉब इज टू डू योर बेस्ट. गीता में विश्वास करते हो तो गीता सार पढ़ लिया करो. आई एम नॉट गिविंग एनी मॉरल लेक्चर, बट आई एम जस्ट सेइंग, इट्स जस्ट अ क्वेश्चन ऑफ हैविंग दैट. अब उसके बाद what will happen is they'll start with very simple questions. What's your name? That is a general question they'll ask you. अब यू से ये पागल है क्या बैठे हुए हैं? नाम पता है, मेरा फॉर्म सामने पड़ा है. That's a way to see that you are at ease with yourself, and then they'll say, please tell us about yourself. Generally, this is the format. Now this is a catch. How much you speak about yourself, in what manner you speak about yourself. Can anybody give me an example? क्या गड़बड़ हो सकती है या क्या अच्छा हो सकता है? Anyone? Yeah, tell me. Let us say I have asked you, please tell us about yourself. You come here with me. Come. No, I'm done. After all, see, it's all a mock. It's all a fake practice. Yeah. Tell us about yourself. Good morning, board members. My name is Rahul Sivare, and I basically belong to a small village, Pathar Kachar, belong to state of Madhya Pradesh. I did my schooling from government school at the class of 5th, and after that my family shifted to nearby city, and over there I completed my secondary education. After that I got admission into Delhi University, and over there I completed my graduation. If I talk about my hobbies, it's playing cricket. In free of time, I would like to cook some and help my family member in the household chores. So that's all about me. Thank you. Very well spoken. You can clap for him. But here now, he is kept on track. But there are a few suggestions I would like to make. One is, of course, your answer should always be brief and to the point. Some people brag about it. I am a hockey player, I have won this national award, I have done that, मैंने ये तीर कमान चलाया, वो तलवार चलाई, ये किया, वो किया. Don't try to do that. They are looking for people who are full of humility. And then not long answers. Rahul spoke very well, but best will be, I belong to this village, I have done my schooling from here, my college from here. This is what I have been doing since by leaving the college, and always be truthful and honest. If you have not been doing anything, if you have been preparing only for civil services for last 5 years, 10 years, there are people I come across, doesn't matter. There's no shame in preparing for 10 years or 5 years or 3 years or 5 years. There's no shame. After all, what is wrong with it? Be truthful and honest. And don't be arrogant. Be full of humility. Don't be arrogant. But yes, you have to be polite with all the respect to the board, and you have to be firm in what you say. So here, as I said, you shorten it. And now here is this a catch. Now Rahul said, I cook. Now he'll ask you, what do you cook? तो फंस गया. अब आप कुकिंग का हॉबी तो है नहीं आपकी. Maybe you are cooking dal chawal for yourself. Isn't it? Most of us are doing, they write cooking as hobby, then they get into the trap unnecessarily for nothing. No, cooking is a very big hobby. If you want to know, girls will know more than you. And then cooking also will mean that they might ask you, okay, tell us what is continental food. Shivani, can you tell me what is continental food? नहीं मालूम है ना बेटा, आपको मालूम है. What's your name? प्रिया, आपको मालूम है? No, you know it.
What's your name? Akash. You get me? So in these very simple questions there will be catch. Like I tell you what happened with me. They asked my name and then they said, where do you live? So I said, sir, I live in Delhi. So what is Delhi? Delhi is a union territory. How many union territories are there, Mr. Vohra? अब मैं गिनने लगा तो नॉर्थ ईस्ट भूल गया. मणिपुर इज सो मच इन न्यूज दीस डेज, तो मणिपुर के बारे में भूल गया. Then he said, haven't you forgotten something in the northeast? I said, Manipur. Oh, very good, very good, you know. Let's tell us, what is Manipur famous for? Are you getting me what is happening? समझ रहे हैं आप? भाई वो तो पूछेंगे अपने फॉर्म से, आपके डैब से, आप क्यों बोखली में सिर दे रहे? यू गेट मी व्हाट आई एम सेइंग? थोड़ा बोलना है, ब्रीफ बोलना है, टू द पॉइंट बोलना है, उतना ही बोलना है जितना कहा जाए. अच्छा, आजकल एक और नया रिवाज वो जानबूझ के शुरू किया उन्होंने. दे ऑलवेज आस्क almost every candidate at the end of the interview, do you want to ask any questions? So many of youngsters, they ask questions at the end. मुसीबत गले बोल ले लेते हैं कि भाई जाओ, जान छोड़ाओ, काम खत्म हो गया यार, गेट आउट ऑफ यार, कि नहीं? So this is what it is. So they'll start with simple. The idea also is to make you comfortable so that you are at ease with yourself. They want to see real Rahul. They are interested in seeing a real Rahul. Not कि हमने मुखौटा क्या बनाया हुआ है. So this is very important. Now there are many other things also, like I will tell you. We should be positive in attitude. On certain points, you may hold a very strong view. Some people have it about, आजकल about two political parties, people have very strong views, you know. अब उसके लिए लड़ लो, पर्सनल ले लो. No, don't be argumentative. If you are asked, you said something, they ask you to give reasons, not generally more than 3, in order of priority. And supposing they will, sometimes they deliberately provoke you to disagree with you. आपने कहा something in favor of this point, मैंने कहा नहीं Mr. Shivani, I'm sorry, it is like this. या आपने उल्टा बोला, मैंने उल्टा बोला. The idea is how do you react. अब आप लड़ सकते हो मेरे साथ, because you hold that view very strongly. Now if you hold a view very strongly, how will you run your administration, tell me? दूसरे की बात सुननी पड़ेगी ना, कुछ accommodate भी करना पड़ेगा, isn't it? So that will go against you if you are argumentative. But if you feel very strongly that what I am saying is not correct according to you, say that very respectfully. Sir, I respect your views, but somehow this is the view that I hold, and the matter ends. You get me what I am saying? या जैसे उन्होंने कुछ बोला, आपने हाँ सर आप यूर राइट, तो कहेंगे ये बंदा ठीक नहीं है. That means you have no conviction in what you are talking about. You get me what I am saying? अच्छा, अभी तक जितनी डिस्कशन की है, is it making sense to you? कुछ बात समझ में आ रही है कि क्या है? This is how they know a person. आपकी नॉलेज से क्या लेना? नॉलेज तो बड़ी टेस्ट होगी, प्रीलिम्स भी हो गया, मेंस भी हो गया, but general awareness is definitely they'll ask you, and that depends on how many of you honestly tell me truthfully read newspaper every day in the morning. ऊपर हाथ करो, just 1%. मॉर्निंग और इवनिंग एक ही बात. देखो ऐसा है, मैं आपको अपनी लाइफ के एक्सपीरियंस से बता सकता हूँ.
if you read newspaper every day for 1 hour in the morning from today, इस इंटरव्यू में तो क्या आप किसी भी इंटरव्यू में जिंदगी में मार नहीं खाओ. I started reading my newspaper every day when I was in the 5th standard. अल्फाबेट तब शुरू हुआ था मेरे स्कूल में. मैंने एबीसी 5वीं में सीखा, फिर 6वीं में चढ़ा तो 6वीं में शुरू हुआ अल्फाबेट, फिर दोबारा सीखा, एबीसी बड़ा पक्का हो गया मेरा. तो हमारे घर पे अखबार आती थी, हिंदुस्तान टाइम्स. माय फादर यूज्ड टू टेक इट. ही सेड कि नहीं तुम्हें अखबार पढ़ना रोज. वो दिन गया, आज का दिन आया. एवरी डे, एंड नॉट ओनली मी, ऑल आवर जनरेशन, एवरीबडी, यू वुड हैव हर्ड. आजकल तो लोग अखबार की भी कहते हैं कटिंग से इंस्टीट्यूट्स को दे दो आप, क्या क्या हेडलाइंस थे. पर मैं आपको बता रहा हूँ, रियली इट्स अ गोल्ड माइन. इट विल हेल्प यू इन मेंस, इट विल हेल्प यू इन इंटरव्यू, इट विल हेल्प यू इन lot of things, because there are lot of items come, there's lot of background about certain things, lot of things, and they will discuss current affairs with you. And if you read in the evening, Mr. Rahul, and your interview is in the morning, तो क्या होगा भैया? You can't tell them. Should you tell them कि सर वो तो मैं शाम को पढ़ता हूँ, उसकी बात आप मत करो, कुछ और बात करो आप. तो कहेंगे ठीक है भैया जाओ फिर, और क्या हो सकता. So I am telling you seriously that please start reading newspaper. It will help you a lot in life. Slowly you will know it. But there are certain items in newspaper you must leave also. क्या क्या छोड़ना चाहिए, जो नहीं पढ़ना चाहिए. आपका क्या नाम बताया आपने? आशु, बताइए क्या छोड़ना चाहिए. वो छोड़ देना चाहिए. हाँ जी, बिल्कुल ठीक है. वेरी गुड. और बताइए कोई, एनीवन एल्स? व्हाट इज इट ऑन विच यू शुड नॉट वेस्ट एनी टाइम? स्पोर्ट्स. ओके. एनीथिंग एल्स? क्राइम रिलेटेड न्यूज. ओके. देन एनीथिंग एल्स? Okay. Sorry? Okay, very nice, very good, very good. आप बताएंगे कुछ क्या छोड़ना चाहिए अखबार में? एनीवन, आप बताएं. नहीं, अखबार जनरली भी पढ़ते होंगे आप कभी कभी, तो क्या छोड़ते हैं? Now I will tell you what to leave and what not to leave from today. Matrimonial columns don't read. ठीक है? Advertisements don't read. You get me what I'm saying? Small news items, not only of crime but other things also. But if there is a case like Nirbhaya or crime happening in Manipur, now yesterday, big armory has been looted. Hundreds of weapons have been taken away from there. Newspaper का वैसे, even if you don't read newspapers, I am sure on your mobile you all have an app. नहीं है तो डाउनलोड कर लो किसी न्यूज़पेपर का. Headlines will come. वही देख लो. You'll be updated at least. And if you want to read more details, you can always read that. But don't ignore sports page. Never ever. Because questions can come on sports to you. फिर क्या कहोगे? मैं तो पढ़ता नहीं जी वो. और tomorrow you are a deputy commissioner in some district, वो स्पोर्ट्स का भाई वो स्पोर्ट्स फंक्शन है सर, वो छोड़ो यार, स्पोर्ट्स को देखने वाली चीज़ है, छोड़ो, भाग लो. Can you do that? आपको अपने जिले के बच्चों को स्पोर्ट्स के लिए इनकरेज करना है और आप मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है भाई साहब. खाने पीने वाली चीजें छोड़ दो, और कोई जो अफेयर है, किसी कुएं में बच्चा गिर गया, वैसी देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स इफ यू सी, बट मेन पॉलिटिकल न्यूज नहीं छोड़ने. यू आर बीइंग अवेयर. आई टेल यू नाउ, फॉर एग्जांपल, yesterday the Supreme Court has given an order about Mr. Rahul Gandhi, you know that.
Don't, it's a political news, but don't you think you should be aware of it? Because they might ask you, they might even debate on this, was Supreme Court right? So unless you know the details, how can you form your own view? Main big news you should be generally aware of. लेकिन मध्य प्रदेश से 2 MLA यहां से वहां चले गए, that's not your baby. Why worry about it? You get me what I'm saying? वो न्यूज़पेपर भी जब पढ़ो, अच्छा कोई न्यूज़पेपर तो पढ़ते होंगे आप, कौन सा न्यूज़पेपर आप पढ़ते हैं शिवानी जी? वही न्यूज़पेपर पढ़ते होंगे कभी कभी. ओके, वो प्रिंट वाला न्यूज़पेपर कोई आप पढ़ते हैं? कौन सा? हिंदू. हिंदू का एडिटर कौन है? ओके. कितनी जगह से छपता है हिंदू अखबार? फ्रॉम हाउ मेनी प्लेसेस दिस न्यूज़पेपर इज पब्लिश्ड? नाउ बोथ दीज थिंग्स कम इन द न्यूज़पेपर एवरी डे. इट्स a legal requirement, the name of the editor has to be printed there. आपने देखो कि लाइन के नीचे कहीं लिखा होता है, और कहां से छपता ऊपर लिखा होता है. So they'll ask you how meticulous you are. Are Hindus being published in Spain? I hope girls and boys you understand there is no syllabus for interview. कोई सिलेबस है क्या? कुछ भी पूछ सकते हैं. ठीक है, तो न्यूज़पेपर को पढ़ो, ध्यान से पढ़ो. दिस इज व्हाट इज इंपॉर्टेंट. बट एनीवे, I was going back to what I was saying. What are they looking for? So I had said that you have to be positive. You don't have to be argumentative. Now you have to be truthful and honest. And you should also have the grace to accept your mistakes. गलती हो जाती कई बार, कोई गलत जवाब दे दिया, बाद में ध्यान आता है कि सर आई हैव कमिटेड माय मिस्टेक, सर आई एम सॉरी. उससे बड़प्पन होता है. बल्कि नेवर एवर इंटरप्ट अ बोर्ड मेंबर. एंड डोंट बी इन अ हरी टू आंसर. फॉर एग्जाम्पल, इफ आई आस्क यू, well, how about Manipur? Manipur तो is very bad sir, it's awful. अरे मैं क्या सवाल पूछने जा रहा हूं, आपको पूरा सुन तो लो भैया, क्या कहना है. Don't interrupt. Now sometimes if I come to know that Priya knows the answer, so I'll stop in between, I'll move to another topic. But you insist कि मैं तो जवाब पूरा ही देना मैंने. I will tell you there's a reason behind it. The 5 board members, interviews for about 30-40 minutes. Each one has 5 minutes. Each one has to ask you 3, 4, 5 questions in those minutes. You understand this? Now if I am not able to ask you all the questions, what will happen? Either I am happy or I am unhappy. I may be very happy with 2 of your answers. I say, I don't ask the rest of questions. Or I find that you know nothing, so why waste time on you? You get my point? You have to be very, very careful while talking. So, and I said no interruptions, and whatever they say, you must obey the command. Sometimes if it is a tea time for you, supposing generally tea is served at about 11 o'clock or 4 o'clock in the afternoon, when the tea comes, tea will come for you also. कुछ मैं तो नहीं पीता सर, मैं चाय नहीं पीता. क्यों नहीं? मैं पीते, मैंने कभी पी नहीं, मैं घर में ही. डोंट डू दैट. चाय आने दो. एंड डोंट स्टार्ट इमीडिएटली कि मैं पहले पी लूं, मेरा काम खत्म हो जाए. Unless the chairman starts sipping tea, you will find other board members will not start. You also will not start. छोटी छोटी बातें हैं, small little things are there. फर्क सिर्फ कितना पढ़ना है? आधे मार्क का. So you know what a half a mark is?
यू अंडरस्टैंड द वैल्यू ऑफ हाफ ए मार्क किसी भी चीज में. ओके, नाउ the last is that 5 areas you must cover while preparing for your interview, whether you go here or whether you go anywhere in life. These tips are not only for the UPSC interview, they are tips for generally for any kind of discussions that you are going to have in life. You will agree they are important everywhere, isn't it? So normally of course you must know about UPSC also. जिस कंपनी में आप जाते हो उसके बारे में पता होना चाहिए थोड़ा सा, isn't it? The subjects that you have taken you should know. You are an electrical engineer from IIT, but you are doing finance now in a bank. You know this happens. आजकल तो सारा ये हो रहा है. तो I ask you a question on electrical engineering. You say, सर वो तो मुझे पढ़े 10 साल हो गए सर, मैं भूल गया. So it doesn't make sense. आपका सब्जेक्ट है. You are supposed to know some basics at least, and the latest advances at least you must know. आपका सब्जेक्ट उसके बारे में पता हो. जनरल नॉलेज की मैंने बात करी ली. हॉबीज के बारे में पूछ सकते हैं. आपके डैफ में आपकी बैकग्राउंड के बारे में, अबाउट योर स्टेट, फॉर एग्जांपल यू कम फ्रॉम मध्य प्रदेश, दे माइट आस्क यू व्हाट इज एग्रीकल्चरल आउटपुट इन द लास्ट ईयर देयर. They can ask you this. You get me what I am saying? So about your state you must be thorough. You have studied in a school. You have studied. Any one of you has studied in any Montessori school? आप में से कोई पढ़ा किसी Montessori स्कूल में? आप किस स्कूल में पढ़े? आप किस स्कूल में पढ़े? ओके, सारा स्कूल वहीं था. Montessori कहाँ हुआ था आपका? Why Montessori? What is Montessori? आइडिया नहीं. महात्मा गांधी स्कूल में आप पढ़े हैं. When was महात्मा गांधी जी born? When was he born, my dear friend? Why is he called a Mahatma? You get me what I am saying? तो जो भी whatever you fill in the form, in your form, original form, you must know everything. भरने से जैसे राहुल जी कुकिंग हॉबी हमने भर तो दिया और पता है नहीं तो मुश्किल हो जाएगी. You get me what I am saying? So whatever you have told them about yourself, which is before them, they can ask you this question on anything about that. Then of course they can ask you generally also about, they might give you a problem to solve. As an administrator you will have to do it. No? तो उसके लिए क्या यूज करना? Common sense. As I said in the beginning. Oh, I have taken a lot of time. Okay. So roughly these are the things. I have finished on this now, as of now. If you have any questions, please go ahead. Yeah, please. So what about facial expression? Like when we enter the room, how You should be pleasant. You should be warm. गुस्से में तो नहीं जा सकते, टेंशन में भी नहीं जा सकते. Because if you become tense on this situation, if it's a part of your life to be tense in situations, how will you handle a situation? हजारों की भीड़ है, लाखों की भीड़ है, 50 बंदे जुलूस निकाल रहे हैं, शाउट कर रहे हैं, वहां पे क्या करोगे आप? गुस्सा करोगे? गुस्से का जमाना हमारे टाइम में था, कर सकते थे, आज नहीं कर सकते. कैमरे वाला देख लेगा, 8 घंटे घुमाता रहेगा टीवी पे, ये साहब नए डीएम साहब आए हैं साहब, गुस्सा करते रहते हैं हर वक्त. पॉसिबल है नहीं है. तो सो मच ऑफ मीडिया ऑल अराउंड. आज तो आप सैर पे जाओ, पार्क पे जाओ, वहां भी कभी कल कोई मिल जाने वाला आपको, पूछेगा आज क्या हाल चाल है जी आपका, कैसा रहा प्रिया जी आज आपका दिन जी, मैं कितने बजे आप उठे,
6 बजे। 6 बजे आप कितने बजे रोज उठती हैं? 8 बजे। ब्रेकिंग न्यूज। ओके, एनी अदर क्वेश्चन? डॉक्टर, ओके, absolutely, they are generally asked. What is your answer? Tell me honestly. Us as doctors are taught and trained to be evaluated for the other person's opinion. I think that is something that I feel. And that's a perfect answer. See, I told you in the beginning, be honest and truthful to yourself. You don't have to manufacture an answer. You should be honest everything. Why are you appearing for civil services? You are an IIT, why don't you go and join somewhere else? You will have an answer for everything. Why are you wasting your parents' money, or you are trying here for 10 years, failing every time, still you are not leaving? You will have an answer, genuine answer. होगा नहीं होगा? Be honest and truthful, I said in the beginning. This is the deep meaning of the words that I used. अभी जब आपका मॉक इंटरव्यूज आएगा, आप आना मेरे पास. आई गो टू राउज IAS स्टडी सर्कल, जनरली जाता हूँ मैं, संकल्प भी जाता हूँ, बट एनी वे दैट अ पार्ट. तो और कोई सवाल पूछिए. या प्लीज आकाश. Are you supposed to answer it, or you're supposed to say like? Oh, very good. If you don't know, if he is asking, are you supposed to answer? If I asked a question, he has only a faint idea, should he answer or not? The answer is no. Unless you are sure that you know the answer. Sorry, sir, I don't know. Not knowing is not a crime. Nobody knows everything under the sun. Even if out of 10 questions, if you say no to 5 questions, is not a problem. And out of remaining 5, if you answer 3 also very well, you made it. And try to, if you get an opportunity, try to take the conversation towards the area of your core competence. आजकल ये एक नया वर्ड आ गया, core competence. Yeah. So what if you don't have a hobby? Then say so. I said be honest and truthful. I hope you have not written in the form. So if you write in the form, I have a hobby, and then to them you say I have no hobby, फिर तो sorry नुकसान हो जाए. हाँ जी, somebody was asking me a question this side. Same question. No. Anything else? Yeah, Rahul. As of now, I'm going to write the main subject in English medium, but I thought, sir, I should appear in an interview in my native language, like mother tongue, because over there, I thought that I should have a more interactive. I feel much comfortable in Hindi. That's perfect. But have you filled up the medium of language in the interview? Because that's my not even I. Okay. So generally, you should, while filling the form, there is no shame in writing Hindi at all. If you are not comfortable in English, say Hindi. What's wrong with it? This is our language. See, people talk of communication skills. You should have good communication skills. Communication skills have nothing to do with English language at all. Communication is how do I communicate? How do I talk? It can be in Hindi or Tamil or Odia or what have you. It can be mixed also. Yeah. There's no problem. They want to see Rahul, not his command over English language. But you can't speak, totally broken languages both. ऐसा ना हो दोनों की टांग तोड़ दे आप, वो तो बात नहीं बनेगी, नहीं? But yeah, you can. But avoid, but if it is not possible, speak bilingually. Yes, yeah. I forget your name, please. Ashwini. तो अश्विनी सेज क्या कहा आपने?
नमस्कार कह सकते हैं कि नहीं? जरूर कह सकते हैं, हाथ भी जोड़ सकते हैं. There's no shame in all this. Like he was asking about the background. No shame. Why should you be ashamed of anything? अंग्रेज चले गए भाई. We have to get it off our system altogether. चल रहा है, कोई अच्छी बातें थी उनमें, अच्छी बातें सीखी, करनी चाहिए. Nothing wrong in learning good. But if I want to do my own thing, why not? Absolutely. Any other questions you have? Yeah. What's your name again? Rituraj. He says if you have failed in the past and now, that is no bearing. You have come you have come fresh. That is no bearing at all. See, they are not prejudiced against you on anything whatsoever. It will be a very pleasant experience when you will meet them. Very pleasant experience. और अभी तो आजकल मॉक इंटरव्यूज है, हमारे टाइम में तो मॉक इंटरव्यूज ही नहीं थे, गूगल भी नहीं था. हमें तो एक चीज पता करने के लिए लाइब्रेरी में 6 घंटे बिताने पड़ते थे. यू पीपल आर वेरी लकी, यू आर इन गोल्डन टाइम. Absolutely. Anything else? Yes. What's your name? Harsh says how to get fear of speaking where in an interview also. Okay. Practice. Practice. Practice makes a person perfect. बात सुनी आपने. प्रैक्टिस करो बोलने की, शीशे के सामने करो, फैमिली मेंबर्स के सामने करो, फ्रेंड्स के सामने करो. कहेंगे क्या बोल रहा है हर्ष, पता भी है, तो होश भी है क्या कह रहा है. कोई नहीं मिले तो पेड़ को भाषण दे दो. और आजकल तो यू आर लकी, यू हैव ऑडियोज, यू हैव वीडियो टेप्स, यू हैव डू व्हाटएवर, यू कैन ऑलवेज सी योरसेल्फ. Practice, practice, practice. I was very shy. I could not speak even 2 words, but now I can speak very well. No problems at all. So these are the things, my dear friend. For example, this. You don't need this only for UPSC interview. You need to overcome this problem of yours otherwise also. So your job is all the traits which are needed for whatever little tips I have given to you. See yourself where you are strong, where you are weak, and wherever you are weak, start working on that from today. बात खत्म हो गई. Yeah, please. Oh, yes. So very, I'm grateful, doctor, you asked me this. So I forgot. Then they'll say thank you so much. So you get up, go by the side of the chair. Button up your coat. Thank you, sir. Only to the chairperson again. And that lady. Thank you, ma'am. Take one step back. Then walk out briskly. पीछे मुड़ के नहीं देखना क्या बात कर रहे हैं. और पीछे मैंने अच्छा क्यों कहा एक कदम पीछे लो? Any reason? Can you guess, suggest? That apart, Rituraji, it's not good to show your back also at once. तो काम हो गया, वैसे मैं जा रहा हूँ जी आपका. That way. Anybody else? Yeah, please. क्या? ये आजकल सुना मैंने पहनने नहीं देते, लेकिन अंगूठी इज अ वेरी डेंजरस थिंग. आपने कोई पहन रखे हैं, बड़े स्टोन्स पहनते हैं लोग, कोई 4 पहनता है, कोई पुखराज पहन रहा है, कोई नीलम पहन रहा है, कोई मोती पहन, दुनिया भर के. वो पूछ लेंगे भाई साहब ये क्यों पहना है, फिर फंस जाओगे. ज्योतिषी ने कहा है, अच्छा ज्योतिष में विश्वास करते हो, बस हो गया काम. तो जनरली पीपल प्ले से मेरी माँ ने कहा था इसलिए मैं पहनता हूं. दैट बट वाई भी है, उतार थोड़ी देर के लिए भाई. एनीथिंग ऑन विच यू कैन लैंड इन ट्रबल, वाई टेक दैट प्रॉब्लम एट ऑल. सिर पे मुसीबत क्यों मोल लेनी. उस दिन अखबार भी पढ़ के जाना है, अपनी स्टेट के बारे में भी पता करके जाना है, लेटेस्ट क्या है,
टाइम से पहुंचना, वो सारी बातें बाद में करेंगे, आप आना, बाद में बात करेंगे। यस प्लीज। ट्रूथफुल एंड ऑनेस्ट, क्या करोगे आप उस सिचुएशन में? आप ईमानदारी से क्या करोगे? जो करोगे बता दो, कोई दिमाग पे बोझ डालने की जरूरत नहीं। यू गेट मी? ट्रूथफुल, ऑनेस्ट, ट्रांसपेरेंट। हियर आई एम सर बिफोर यू, you make of me what you like, and that's okay. Yes. But there is sometimes it doesn't suit the requirement of the book. Who told you that? Who told you that it doesn't suit the requirement? How do you know what is my requirement? शरारती और वो वही शो कर रहा है। तो बस ठीक है, वो नोट कर लेंगे मेंटली, वो कह देंगे ये बंदा फिट नहीं है, इसको नंबर कम दे दो। तो यही तो, यू हैव टू, आई टोल्ड यू देन, यू हैव टू बी केयरफुल, यू हैव टू बी फॉर्मल, यू हैव टू बी वार्म, यू हैव टू प्लेजेंट। आई हैव सेड सो मेनी थिंग्स। अब सुन के आपने इधर से इधर निकाल दोगे तो बात बनेगी नहीं। वो नितिन जी बैठे हैं यहाँ पे, इफ यू वांट लेटर रिकॉर्डिंग एंड ऑल समथिंग, आई डोंट नो वेदर यू आर डूइंग इट और नॉट, बट एनीवे वी कैन मीट अगेन ऑल्सो। टेल योर फ्रेंड्स, maybe we'll have another session for people. Okay, anything else? Try appear for the defense exams as well, and this is the interview I got paid. So they can ask the same questions. How you do not appear again for the defense exam? How you can switch for the civil service? So What you tell me? Why did you not? Why are you switching over? There must be some reason, isn't it? Yes, sir. Because in defense, I would serve only to the nation on a very, not to say but narrow, but the diversity was very limited. The defense services. The diversity that civil service provides is much larger as compared to defense. It's a good answer. But they can ask, So defense, they'll ask you more questions on that. You answer those questions also. They'll say, do you think defense is not important? You say, yes, it is very important, sir. But in my view, can anybody challenge your choice in life? Yes, sir, I respect your views, but this is my view. I told you in the beginning also, isn't it? Give this answer. Clear हो गया? Anything else? Can we talk a little about personality development also? I said that in that. Should we move over a little bit? Because otherwise also, then it will help. So, tell us, what is personality? And what is development? कुछ बताएंगे? है? Your attitudes, your behavior, your thing. अच्छा, आपको कभी कभी लगता होगा, each one of you, be honest, tell me, do you think there is some deficiency in your personality? डॉक्टर साहब आपसे पूछता हूं, यू आर इन द मेडिकल प्रोफेशन, two doctors being equal in everything, in qualification, capability, yet one doctor is more popular than the other. होता है, why? Simple. That is the crux of the matter. All those who studied with you in your various colleges and post graduations and what have you, already some have gone ahead of you, some are remaining behind. Right or wrong? All things being equal, one who can speak better, present himself better, will move ahead in life. अपने आप, please look around your relatives, your friends, your मोहल्ला, आपने देखा होगा, पढ़ा लिखा नहीं होगा, बट
he has done very well in life. सही है गलत है? I have seen brilliant scientists who even get Nobel Prize for their invention, but when it comes to speaking from a stage, they cannot express as to what they have done in life. You have heard of Winston Churchill? He is called the greatest Englishman, and his speeches were well known. He had realized very early in life that if you can speak well, you can achieve anything in life. But yes, speaking also has then other things also. Well, as we talk about personality, so certain things are covered as it is that we have discussed with you. These should not be only for UPSC, but they should be otherwise also. Now, the first thing always is, I think, that what traits are needed, I am not interested in. You would be knowing your traits. आपको सबको मालूम है कि नहीं कि मेरे में क्या कमी है और क्या अच्छा है? मालूम है ना? Start working on that. But what should be done? जहां काम करना है वहां क्या करना चाहिए? So there is a series of steps that you have to take. In fact, I had a book. I had written a small book also. This is the book, Tips for Personality Development. It costs 100 rupees. Amazon पे आपको मिल जाएगी if you want that part. उसमें वापस रख देना. So first thing is, you must have very strong desire to improve. बात हुआ, सुन लिया, बात खत्म होगी तो वहीं के वहीं. You have to take action. Determination होना चाहिए. And belief that yes, I can do it. I will change from today. I will not hesitate. I will not do this. I tell you, once I had a boss who used to stammer a lot. Stammer समझते हैं आप? बोलता बहुत था. मैंने कहा यार तू क्या करता है भाई? कह रहा सर मैं बहुत शर्म करता था, बोलता नहीं था. लेकिन जब मैं कॉलेज गया तो एक लड़का मिला who was also stammering a lot but he used to speak a lot. उसने मुझे नोटिस किया. कहता है मैंने कहा यार तू क्या करता है? कहते तकलीफ सुनने वाले को तेरे को क्या परेशानी, तू बोल. वो ऐसा चालू हुआ, उसके बाद वो बंदा चुप ही नहीं किया सारी. दैट्स अ वे ऑफ लुकिंग एट लाइफ. यू गेट मी, इजंट इट? और सही भी है. तो पहली तो चीज है डिटर्मिनेशन वगैरह होना चाहिए. पहले तो ये आज तय कर लो कि भाई मुझे इस चीज को मैंने ठीक करना है. और फिर जनरली क्या आता है? पहले तो मैंने आपसे कहा कि फिजिकल अपीयरेंस बात की हमने. तो क्या करते हैं? अगर हम ऐसे गंदे बने रहेंगे तो कैसे बात बनेगी? नहीं बन सकती ना. अच्छा, कुछ बिलीव्स हैं. When I joined Mount Abu, the National Police Academy used to be in Mount Abu in those days. So on Tuesdays I was not shaving. फेथ था कि मंगलवार को शेव नहीं करनी चाहिए. कई लोग अभी भी मेरे ख्याल करते होंगे, साबुन नहीं लगाते, तेल नहीं लगाते. होता ना, मंगलवार है. मैंने भी नहीं किया. तो हमारे चीफ ड्रिल इंस्ट्रक्टर थे बड़े मशहूर, मिस्टर स्पाडिगम. वाज अ टेरर ऑन फील्ड. तो अंधेरा सुबह सुबह का टाइम था, थोड़ा रोशनी अंधेरा देखा उन्होंने. तो मुझे देखा उन्होंने, कहा बड़ी ट्यूसडे स्टेप आउट. स्टेप आउट मतलब बाहर खड़ा हो, एक कदम बाहर, लाइन से बाहर. ऑल ट्यूसडे स्टेप आउट. तो मेरे जैसे और भी थे 3-4. डबल अप टू द मेस, back in 10 minutes after shave. If you are here on 11th minute, 4 rounds of this big round you will have to undertake. And now run. वो दिन आया ऋतुराज जी, और आज का दिन है. मैं शेव करता हूं, रिटायर भी हो गया, पर हनुमान जी नाराज नहीं हुए मेरे से. So there are some dogmas, some belief and all. I am not coming between you and your God, but I am saying कि कई चीजें ऐसी ही है ना जो
which come in the way of your developing your personality. That's the only reason. Now, health का ध्यान रखना बड़ा जरूरी है. आप में से कितने लोग हैं जो बिल्कुल वॉक नहीं करते? ये वॉक, इसको वॉक को मत गिनो आप, ये जो आप चलते रहते हो. वैसे वॉक करते हो? कोई नहीं करता. एक्सरसाइज कितने लोग करते हैं? वेरी गुड. तो थोड़ा ही करो, 5 मिनट से शुरू कर लो. करना चाहिए. एक्सरसाइज कर लो. ये गिनती कर लेना कल से, वेरी इंपॉर्टेंट. और ये जो मैनर्स और हैबिट्स जो भाई मैंने बात की है, यू इफ सी प्लीज गो ओवर योर माइंड. व्हाट डिड आई से? नॉक एट द डोर. इट अप्लाइज टू लाइफ आल्सो, अदरवाइज एज वेल, isn't it? IAS or no IAS, no, isn't it? So many of the things that we have talked of, this is manners and habits, how you conduct yourself, how do you meet people, how do you meet people when you meet somebody. सिर्फ एक ही एग्जाम्पल दूंगा. आपसे मैं मिल रहा हूं पहली बार, आप खड़े होइए. हेलो. इन्होंने बड़े अच्छे से मेरा हाथ मिलाया. कई लोग क्या करते हैं, हाथ मिला रहे हैं, पता लग जाता है बंदा कैसा. तो मैनर्स, हैबिट्स, ऐसे आर ऑल वेरी इंपॉर्टेंट. यू हैव टू यू लर्न दिस. बेसिक चीज रिगार्ड फॉर अदर्स. बेसिक उसका मुद्दा क्या? मैनर्स का रिगार्ड फॉर अदर्स. और कम्युनिकेशन स्किल्स बड़ी इंपॉर्टेंट है. बात हो गई, कैसे बात करनी है. इफ आई से समथिंग मिस्टर ऋतुराज एंड इफ यू अंडरस्टैंड ओनली देन दिस द कम्युनिकेशन. क्यों प्रिया? If I say something and you don't understand or you misinterpret it, that's not communication at all. So you have to see that you are understood properly, but for that you must listen properly. अब सुनने को कोई तैयार नहीं, बोलने को सारे तैयार. देखा होगा आपने, मैं टीवी डिबेट्स पे बड़ा जाता हूं तो मैं देखता रहता हूं बड़ा अम्यूज होके. वो लोग लगे रहते हैं यहाँ पर, बोलने नहीं देते एक दूसरे को. समझ में नहीं आता कौन क्या कह रहा है. लिसनिंग स्किल इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. यू मस्ट इंप्रूव योर लिसनिंग. वो कैसे होगा? गिव इट मोर टाइम. एंड यू यूज्ड, डॉक्टर साहब, ए वेरी नाइस वर्ड, एम्पैथी. फोन आया किसी का मुझे कि सर सॉरी टू इन्फॉर्म यू माय मदर हैज डाइड. अरे यार, जब मेरी मदर मरी थी तो मैंने अपनी मदर की कहानी सुनी. तो मेरी माँ को तो गुजरे हुए 20 साल हो गए, उसकी तो बेचारे की अभी 2 घंटे भी नहीं हुए. यू अंडरस्टैंड व्हाट इज हैपनिंग? समझ रहे हैं क्या हो रहा है? तो ऐसे बड़ा कुछ है. तो लिसनिंग इंप्रूव करोगे तो बोलना भी इंप्रूव होगा. बोलना ऑल्सो इज एन आर्ट, इवन इन प्राइवेट कन्वर्सेशन ऑल्सो. आप जो कह रहे हो, कितना कह रहे हो, कैसे कह रहे हो, अगले को समझ आ रहा है नहीं आ रहा. डॉक्टर्स क्या करते हैं? डॉक्टर्स यही बात करते हैं. मैं बड़े साल पहले, व्हेन आई वाज इन नेशनल पुलिस एकेडमी फॉर ए सीनियर कोर्स, देयर वाज ब्लड इन माय यूरिन. यंग डॉक्टर, एमबीबीएस पास, फ्रेश ग्रेजुएट. मैं गया, मैंने कहा जी ये क्या है? ये कुछ हो गया. कहता जी कैंसर भी हो सकता है. मैं आज तक नहीं भूला. कैन यू इमेजिन? आज तक नहीं भूला. So be careful with your language when you talk to friends, family, everywhere. I'm just saying, there's a lot more. और सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? इनिशिएटिव लेना. What is initiative? Come forward. Very good. Anyone else will try? What is initiative? Shivani? Absolutely right. To do something right without being told. That's initiative. Get me? अब जरा before the time runs out, stress management और time management की बात कर लो. So what would you prefer me to talk to you first about, stress management or time management?
हाँ, टाइम मैनेज। बस टाइम का आधे से ज्यादा स्ट्रेस तो टाइम की वजह से है ना। वेरी नाइस, ओके। तो टाइम आपका कौन वेस्ट करता है? ऋतुराज जी ने कह दिया, who's waste your time, go to the mirror, have a look who's the whatever who's the guy is there, he's wasting your time. किस में वेस्ट कर रहे हैं? व्हाट्सएप पे लगे हुए हैं दिन रात, जरा सी घंटी बजी बस उसके पीछे पड़ गए, जैसे इसको तो खत्म करना ही करना है, इसका या तो अभी जवाब देना है, या इसको डिलीट करना है, या इसको फॉरवर्ड करना है। व्हाट्स हैपनिंग? ये गप मारने चले गए, पढ़ाई का टाइम है, गप मार रहे हैं। इट विल नॉट वर्क। अच्छा, टाइम जाता किस में है? कभी ये सोचो, आज ऐसे करना, आप घर जाके whenever जब टाइम मिले, sit down and write down for the last 3 days how much time you spent on what, and you will yourself know कि मैंने इन चीजों पे टाइम वेस्ट किया। वैसे भी नहीं कभी कभी लगता कि मैंने आज ये वेस्ट कर दिया टाइम। Eliminate those items ruthlessly from your life. समझ गए? ruthlessly हटा दो। एक तरीका और टाइम बढ़ाने का बताता हूं। जितने बजे आज आप उठते हो, प्लीज गेट अप हाफ एन आवर अर्लियर देन दैट, ओनली हाफ एन आवर। एक वीक में कितना हो गया? कितने घंटे हो गए? 3.5 आवर्स। महीने में कितने हो गए? एक साल में 150 घंटे से ऊपर बनते हैं बगैर सोए हुए। क्या नहीं कर सकते आप? किताब भी लिख सकते, तैयारी भी कर सकते हैं, जॉगिंग भी कर सकते हैं, प्रैक्टिस भी कर सकते हैं, खेल भी सकते हैं। अभी पढ़ाई का टाइम है तो दिन रात पढ़ाई भी कर सकते हैं, लेकिन पढ़ाई के साथ सेहत का ध्यान रखना जरूरी है। बीमार नहीं होना बिल्कुल। आजकल बहुत फैला हुआ है ये वायरल और ये कंजक्टिवाइटिस वगैरह। यू हैव टू टेक केयर ऑफ दैट। प्रैक्टिस इस चीजों को, और तो आधा घंटा पहले उठने से बड़ा फायदा होगा आपको। और रिड्यूस योर टाइम। एक एटीएम, मैं एक एटीएम भी, इसका भी, इसको ऑन करना जरा, इसका भी एटीएम होता है, इसी में लिख दो एटीएम, इस पे लिख दो, आएगा स्क्रीन। हाँ हाँ, तो आधा घंटा पहले उठोगे आप, और ये अवॉइड करो आप टीवी, मोबाइल, इससे दो से ही फर्क पड़ जाएगा। गपशप ये करो, कॉन्शियसली करो। बहुत टाइम है, बहुत टाइम मिलेगा जो भी करना चाहते हो, बट यू विल हैव टू बी स्ट्रांग विद योर सेल्फ। ओके, राइट अ डायरी। रोज सुबह लिख लो कि आज मैंने ये करना है, ये मेरा टाइम टेबल है, ये प्रायोरिटी है। जो प्रायोरिटी है उसको रेड में कर लो, शाम को डिलीट कर दो जो हो गया। दैट्स इट, कुछ नहीं करना। आई हैव बीन डूइंग इट फॉर लास्ट 70 years। करो, तो फर्क पड़ जाएगा। अभी ये 3 चीजें ही कर लोगे अगर, जो मैंने आपको बताई, you will see the difference, provided you do it seriously। स्ट्रेस के लिए क्या करना है, यही, इसी से मसला काफी हल हो जाएगा।
ब्रीदिंग मैंने आपको बता ही दिया, isn't it? I've already said that. वो करो आप, जब भी टेंशन हो थोड़ा एक्सरसाइज वगैरह कर लिया, स्ट्रेस उससे भी हो जाता है। एक्सरसाइज कभी गर्दन की भी करनी है, पीछे आगे भी करना है, ऐसा भी करने से फर्क पड़ेगा आपको। और 5-7 मिनट जरूर निकालो अपने लिए हमेशा। शाम को सोने से पहले हिसाब करो अपना, हाउ वाज माय डे। So I said 4 things to you about it. So these will help you. तो टाइम का पहले कर लो। I repeat, write down 3 days chart as to what you did from morning till evening. Then you can analyze yourself. And be careful, don't waste the time of others also. मैंने पढ़ाई कर ली, मैं चला गया, हाँ जी राहुल क्या हो रहा है, राहुल पढ़ाई में बिजी है, मना नहीं कर सकता। मोस्ट ऑफ अस आर अनएबल टू से नो, होता है ना, आप कुछ काम कर रहे हो, कोई आ जाएगा तो आप तो सॉरी बोल नहीं सकते, उसको नहीं कहते मोस्ट ऑफ अस, वो तो चला गया अपना काम करके, आपका टाइम वेस्ट हो गया। लर्न टू से नो पोलाइटली, कोई लैंग्वेज ढूंढ लो, अच्छे तरीके से बोलना शुरू करो। Don't let others waste your time. You don't waste your own time, don't let others also waste your time. And it's very, very important. और बड़े मंत्रास ऑफ सक्सेस हैं लाइफ के, अब वो लंबी चौड़ी बातें हैं, आई डोंट वांट टू डू दैट। So little time is left. In fact, about I have quite a bit of time. Any questions you have? Anything further you want to know? Anything? Any one of you? Yeah. You want to ask something? हाँ, वो मैं बता रहा था आपको. I am writing my mobile number here. You can note it down. Please send me WhatsApp message first because I don't pick up on calls. You know जितने calls आते हैं. Once you send me WhatsApp message, if you want to talk to me, कोई बात करनी है, कोई suggestion लेना है, कुछ करना है, I am always available. Of course, I will be doing some other courses also. You can tell your friends also about talking to me, not to your friends. That's only restricted to you. Otherwise, यहाँ तो फिर मेरा तो काम ही हो जाएगा. Okay? तो पहले ये नंबर लिख लीजिए आप. हाँ, वो बता देता हूँ आपको. Can you notice this? ठीक है. R is for retired, not registered. It happened to me. Somebody wrote me a letter. यही गलती होती है, कम्युनिकेशन है ना. नाम ही किसी का गलत बोल दोगे तो क्या होगा. और वो जो मेरी वेबसाइट है उसको मैं लिख देता हूं, M5 ट्रेनर्स, प्लूरल है ये. Is it clear to you? Sorry, my handwriting is awful, but no. Konark is the publisher. He is talking of my autobiography. Autobiography of an unknown, an unlikely police chief. An unlikely police chief. देखिए, नाम की इंपॉर्टेंस के बारे में मैं कुछ 2 लफ्ज और लास्ट बोल लेता हूँ, फिर आप सवाल पूछें. और अबाउट इंपॉर्टेंस ऑफ नेम, नाम की बात आई तो मैंने कहा नाम का जिक्र कर दूं. It would have happened to you many times. You meet somebody and every time you meet you forget his name. होता, पार्टी में भी होता, बार बार मिल रहे हैं, नाम ही नहीं पता, शर्म भी आ रही. आती है ना शर्म कभी कभी डॉक्टर, तो क्या करें,
नाम पूछ लिया, याद नहीं है, ये भी होता है। नाम की बड़ी महिमा है। अभी मैंने अपना बताया आपको, आईपीएस रजिस्टर्ड बता दिया मैंने, बिकॉज समबडी रोट अ लेटर टू मी, मैंने उसका काम ही नहीं किया गुस्से में। यू नो, यू कैन गेट वेरी एंग्री। अगर आपका नाम का प्रोनाउंसिएशन ही ठीक मुझे आता तो भी आप नाराज हो सकते हैं। तो उसकी एक ट्रिक है, मैं सिर्फ ट्रिक बताना चाह रहा था। बहुत चीज़ों की ट्रिक्स हैं मेरे पास जो मैं बताता हूँ लोगों को, बट एनी अभी इसकी बात करके ख़त्म करते हैं। आफ्टर दैट इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस। अब किसी से जाके ये कहना पार्टी में, भाई तेरा नाम क्या है, सपोजिंग वी आर ए पार्टी, आई आस्क यू तुम्हारा नाम क्या है, तो मैं क्यों नाम बताऊं, भाई तू कौन है भाई, है व्हाई आर यू आस्किंग माय नेम, इज इट, नहीं बताता भाई, तो बैठा बैठ गया आपका। बेस्ट वे ऑलवेज इज टू से दैट आई एम सो एंड सो, दिस इज माय नेम, व्हाट्स योर नेम प्लीज। इन फैक्ट बिफोर आई से व्हाट्स योर नेम, you will automatically tell your name. Chances are there or not? क्यों? किसी आप मिलेंगे, अपना नाम बताएंगे, अगला नाम बता देगा कि नहीं बता देगा? 90% चांसेस। नहीं तो you can ask politely, sir, I forget your name. दोबारा भूल गए, you can say honestly, कोई शर्म नहीं करनी चाहिए, sorry sir, I forgotten your name. प्रोनाउंसिएशन का बड़ा भारी प्रॉब्लम हमारे देश में ही, कोई किसी प्रांत से, कोई किसी प्रांत से, और कोई जापानी से किसी से मिल गए या किसी और से मिल गए, बंदा हुआ तो पता ही नहीं चलेगा कि नाम क्या है। तो प्रोनाउंसिएशन भी पूछ लेना चाहिए, शर्म नहीं करनी चाहिए, रिपीट करना चाहिए, नहीं को भाई लिख के दे दे, ये करने से बड़ा फायदा होगा। दिस ए पार्ट ऑफ मैनर्स एंड हैबिट्स, दिस इज ऑल ए पार्ट ऑफ दैट ओनली। तो आज से आप ये शुरू करो, और जिससे मिलो हंस के मिलो, बी पॉजिटिव। यार ये क्या हाल है, मर गए यार, कहाँ फंसा दिया बताओ, आइए फॉर्म भर दिया, घर वाले कह रहे थे, दोस्तों यारों ने डबो दिया, भाई वाई डू इट। कुछ लोग ऐसे होते हैं, आई हैड ए डॉक्टर फ्रेंड, गुजर गए, आई न्यू ही वाज इन लॉट ऑफ ट्रबल फाइनेंशियली, नॉट फाइनेंशियली, फैमिली फ्रंट, डॉक्टर साहब क्या बहुत बढ़िया जी, टॉप क्लास, बच्चे कमाल कर रहे हैं जी, पूछो कुछ, पता लगा मुझे पता फेल हो, बट ही विल नॉट टेल एनी, बच्चे कमाल कर रहे हैं, और क्या बहुत बढ़िया सर, आप बताओ कैसे चलो। इफ यू लुक अराउंड इन योर लाइफ, यू विल हैव सम फ्रेंड्स, सम फैमिली मेंबर्स, समबडी इन मोहल्ला, कोई ऐसे होगा जो चीयरफुल रहता है हमेशा, ढूंढना, सोचोगे मिल जाएंगे, व्हाई नॉट बी अमंग देम। For smile say, I think you know better. They say lesser muscles are used. When you frown, more muscles are used. खुश रहा करो यार, ये इम्तान तो होते रहते जिंदगी, मेहनत करो, कामयाब हो जाओगे, सेल्फ कॉन्फिडेंस रखो, नहीं होता तो कोई बात। These things don't decide. Now I have finished. I'm sorry again. I have the urge because you're young people. So I'm so, first of all, I must thank you, thank Nitin first, thank this institute to give me this time, organize this, and thank you each one of you. Honestly, I'm so grateful that you found time and came today. It's difficult to get people because we all have our own priorities. Now, if you have any last, I have 2 minutes for 3 questions. If you have any last 3 questions, I'll be very happy to answer. Yes. Yes. It makes no effect, but you can do it. See, the point is, it's written in your draft that you're a doctor. Some people, when they ask your name, they generally say, as you already know. भाई क्या जरूरत है कहने की? They'll say, as it's already written in the draft. तो मतलब which means you are stupid, you are asking me this question. आपको पता है सर जी कि मेरा नाम क्या है, आप बेवकूफ बना रहे हो मेरे से नाम पूछ रहे हो मेरा. This is being outright rude. Next question. Yes, Rituraj. How do you? Pleasant. Mentally.
कंसंट्रेशन इज द ओनली थिंग, एज यू हैव टू लिसन। उस वक्त यही सोचना कि मैं कुछ नहीं कर रहा। दिस इज अ पार्ट ऑफ अगेन ए पर्सनैलिटी। एट वन टाइम यू आर डूइंग मल्टीटास्किंग, खाना भी खा रहे हैं, टीवी भी देख रहे हैं, मोबाइल भी सुन रहे हैं, करते सारा कुछ। थोड़ा आदत डालो, डू वन थिंग एट ए टाइम। या तो खाना खा लो, या टीवी देख लो, या मोबाइल सुन लो। आदत डालने पे। और व्हाट्सएप में एक काम शुरू करो, आपसे बोलो हर 1 घंटे बाद देखूंगा। रात को आप सब लोग फोन स्विच ऑन रखते हो, कभी रात को फोन आया किसी का पिछले 6 सालों में, जब से मोबाइल है आपके पास? फिर क्यों ऑन करते हो? रेडिएशन होती है पास में, इट्स अफेक्टिंग योर हेल्थ। बहुत जरूरी हुआ तो उसको एरोप्लेन मोड में लगा के रख लो, किसी दिन जब जरूरत हो तो। उसको भी रेस्ट करने दो थोड़ी देर, फोन बेचारे को यार। तंग आ गया तुम लोगों से, हर वक्त उठाए रखते हो उसको। और बताओ, एनी अदर क्वेश्चन? सेकंड लास्ट क्वेश्चन। यस, या before like हम्म I do become हम्म after becoming, what was the change in the mindset? Was it like a victory or the What's your name? I'm sorry. Ashwini. Ashwini says, what was the change? How was the change I felt from an ordinary commoner to the IPS? See, it had lot of emotions. Lot of emotions. One was, see, that I suddenly got shifted from a lower floor to first floor. एग्जाम्पल देता हूँ, माउंट आबू पहुंचा मैं, तो कहाँ जाना है तो पूछा किसी ने, कहा जी वहाँ पे एक इंस्पेक्टर बैठे हैं तिवारी साहब, उनके पास जाइए। तो हम नितिन चले गए उनके पास। देयर वाज अनदर ऑफिसर आल्सो विद मी, अनदर रिक्रूट लाइक मी, जौनपुर से था एमके सिंह, उसको मैं स्टेशन पे मिला था। तो पहले तो उन्होंने ध्यान नहीं दिया इंस्पेक्टर साहब ने, जब हमने कहा कि हम लोग ये हैं प्रोबेशनर हैं, तो खड़ा हो गया, जैन सर। अब हम डर गए, हमने कहा यार ये खड़ा हो गया है, और जैन सर कह के बात कर। हमारा मन कर रहा था हम उसको सर करके बात करेंगे ना। तो धीरे धीरे समझ में आया कि नहीं यार, ही इज राइट, यू आर ए सर। तो इट टुक टाइम टू गेट इनटू दैट ग्रूव, एंड देन यू बिकेम सर। इन घर में तो खैर थे ही, लेकिन ये नहीं पता था कि बाहर भी इतनी इज्जत लोग करेंगे। लेकिन उसके बाद जब काम की बारी आई, देन इट वाज अ सी चेंज। Then you could work, then you realize you could work for not only individuals, you could work for thousands, for millions. It's a big thing. The gaadi, jhanda, danda, this all is fine. Ultimately, this is not the life is all about. आप बताइए, you are from various districts of India. अगर आपके डिस्ट्रिक्ट में जहां आप पोस्टेड हैं, अगर पानी नहीं हो, and if you are able to give drinking water to the people there, can you imagine what you would have achieved? Imagine करो आप। So there's a lot of sea change, but then I started living then in 2-3 compartments in life, behaving in a certain way in my official circle, behaving in a other way, and you have to do it. Can you leave your parents? Can you leave your family? Can you leave your background? Can you leave your brother who hasn't done well, or a sister? No, isn't it? So then you become, you may use the word split personality, ऐसा नहीं होता, but it is adjustable, so it's not difficult at all. Yeah. So finish these questions. Thank you so much once again. God bless you. Prepare well, work hard, you will all clear it, and you will succeed in life. My best wishes to you. Thank you and goodbye.